Hello दोस्तों. So now that your board exams are coming towards an end, we will be discussing regarding the next step कि board exam ख़त्म होने के बाद आपको क्या करना है to be able to clear your NEET 2023 exam. So the short answer is basically आपको mock test देना है, mock papers देना है. I will be elaborating more on this, but just to give you an idea कि इस video का content क्या है, this slide. सो लेट्स जस्ट हैव अ रिकॉन ऑफ व्हाट टाइम यू हैव लेफ्ट नाउ. सो आपका नीट का एग्ज़ाम 7 मई को होने वाला है एंड बोर्ड्स एंड होने वाले हैं अराउंड मिड टू लेट ऑफ मार्च डिपेंडिंग ऑन आप कौन से बोर्ड में हो और क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है. तो इसका मतलब कि आपको 1 से 1.5 महीना मैक्स मिलने वाला है बिटवीन फ्रॉम द एंड ऑफ योर एग्ज़ाम to the NEET exam. और इस टाइम को आपको every single day you have to utilize properly. You must not waste a single day, and I'm not exaggerating when I'm saying this. It is absolutely crucial. Every day is absolutely crucial. So mock papers आपको देना है एकदम as the same pattern of the NEET exam. So before that, let's just recall what is the pattern of the NEET exam. So this is your pattern of the NEET exam to NEET 2022 year से जो नया pattern जो आया है, physics, chemistry, botany, zoology, every subject will have section A and section B. Section A will have 35 compulsory questions, section B will have 15 questions, जिसमें से आपको 10 questions attempt करने हैं. So basically every section has a total of 180 marks and the total exam is of 720 marks. And you should be aiming for a score of 630 up in your NEET exam to be able to secure a good seat in a good government medical college. So I'll just keep this slide for a couple of seconds for you to take the pattern in, and note that every correct answer will be given +4 and every incorrect option will be given a -1. Unattempted or unanswered questions will be given no marks. So I've just told you must solve mock tests which are in the exact same pattern, marking scheme and question pattern scheme as the actual NEET exam. और इसका frequency जो रहता है आपको initially आपको every alternate day करना है and then you need to shift it to every single day. I'll make this more clear in the coming couple of slides. सो इनिशियली मतलब आपका फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ प्रिपरेशन, आपका 1 से 1.5 महीना टाइम है आपका फ्रॉम द एंड ऑफ योर बोर्ड्स टू योर नीट एग्जाम. सो इन द फर्स्ट कपल ऑफ वीक्स ऑफ योर प्रिपरेशन टू गेट यूज टू द फ्लो एंड द पेस ऑफ दिस फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस, आई वुड लाइक यू टू सॉल्व अ मॉक पेपर एवरी ऑल्टरनेट डे. जैसा आप मैंने एक टेबल आप कर दिया, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वीक डेज ऑफ द वीक, और ब्लू कलर represents solving of the paper. 3 hours and 20 minutes का जो पेपर रहता है आपको वो देना है. एंड जो पीच कलर, येलो कलर जो है दैट इंडिकेट्स एनालिसिस मतलब जो मिस्टेक्स हुए हैं उनको देखना एंड रेलिवेंट जो थ्योरी है उसको NCERT से पढ़ना. सो इन द फर्स्ट कपल ऑफ वीक्स व्हाट यू हैव टू डू इज यू विल गिव 3 hours 20 minutes every alternate day to solve the paper, and remaining of that day as well as the entirety of the next day you will give to analyze your mistakes and read the relevant theory from NCERT or any other study material that you have. I think that is adequately clear. If not, you can again ask in the comment section below, and I'm going to keep this slide for a couple of seconds for you to take it in. सो आफ्टर द फर्स्ट 2 वीक्स मतलब अभी तो आपको पेस का एक अंडरस्टैंडिंग हो गया, एक समझ आ गया कैसे क्या करना है, एंड यू विल बी गेटिंग बेटर एट इट. सो इसलिए वी विल नाउ शॉर्टन द टाइम स्पैन. सो हम रोज़ एक पेपर करने वाले हैं एंड रिमेनिंग ऑफ द डे यू विल डू द एनालिसिस. सो 3 hours 20 minutes यू विल बी डूइंग द पेपर, एंड बाकी जो टाइम है आपका दिन में यू विल डू द एनालिसिस. नाउ डोंट से दैट दिस इज़ वेरी लिटिल टाइम टू डू एनालिसिस, बिकॉज इट्स नॉट, बिकॉज ऑफ 2 reasons. नंबर 1, आपने जो पहले 2 वीक्स में जो किया था ऑल्टरनेट डे का जो पैटर्न किया था उससे आपका एक अंडरस्टैंडिंग हो गया है. नाउ यू कैन डू इट मच फास्टर एट अ फास्टर पेस. एंड सेकेंडली द एग्ज़ाम, द मॉक टेस्ट विल ओनली बी ऑफ 3 hours and 20 minutes. एंड बाकी जो टाइम है यू विल गेट अराउंड, यू शुड बी स्टडिंग अराउंड 10 hours a day, 12 hours a day, जस्ट कपल ऑफ वीक्स बिफोर योर नीट एग्ज़ाम. सो इसलिए अगर आप उसमें से 4 घंटे भी आप निकाल लेते हो फॉर यू गिविंग योर एग्ज़ाम 3 hours 20 minutes, you are still getting 8 hours to review your mistakes and read the relevant theory. So in that way it's adequate. Every day आपको 3 hours 20 minutes देना है for doing the paper, and 8 to 9 hours you have to give for doing the analysis and relevant theory from NCERT. So इस तरह आपको करना है from week 3 onwards. So I hope you got an understanding that we are increasing the frequency. पहले थोड़ा सा कम frequency to get you used to the thing, and right after that we'll be increasing the frequency once you have mastered the
speed and the pattern of practice. Now, just a few tips on how you can actually simulate the environment of the exam. So first of all, you have to take the exam seriously. ऐसा मत समझिए कि आप घर पे एग्ज़ाम दे रहे हो तो you can just do it in a self-study matter. ऐसा नहीं है. You have to take it seriously. So first of all, please purchase OMR sheets. They are available online as well as in any stationery store that you go. So please purchase OMR sheets in which you will be bubbling the options. Keep 1 or 2 white sheets beside you for rough work and calculation. तो आपके main day of the exam में you will not be getting any white sheets. You will have to be doing the rough work on the paper itself, but just when you start out, जब आप एकदम पहले mock test देना शुरू करोगे, just to get you used to it, you can keep a couple of white sheets, but eventually you have to stop using that also. You have to do your rough work on the question paper itself, because no such white sheets will be given to you in the exam. Keep one ballpoint pen either in black or blue for bubbling the answers and doing all the rough work, and remove all other objects from your study space. और आपके सामने कुछ भी नहीं होना चाहिए, आपके एग्ज़ाम के टाइम में भी कुछ नहीं रहेगा आपके पास, और कुछ रहना भी नहीं चाहिए in your house also. Do not keep any calculator or any electronic devices like फ़ोन तो बिल्कुल ही नहीं रखना है, साथ ही साथ कोई स्मार्ट वॉच या फिर किसी और तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ भी नहीं रखना है, बिकॉज आपके एग्ज़ाम के टाइम में ऑल दिस इज़ नॉट अलाउड. So please get a habit of not having these things in front of you. As I would recommend that you use fans instead of air conditioning, because ऐसा ज़्यादा चांस है कि आपका जो नीट का सेंटर होगा उसमें एयर कंडीशनिंग नहीं रहेगा. So it's best that you try to accustom yourself to fans instead of air conditioning. And tell your family not to disturb you during these 3 hours 20 minutes that you will be giving your mock papers. So आप प्लीज़ खुद को एक अपने कमरे में आइसोलेट करके रूम बंद करके एक प्रॉपर सेटअप करके गिव द एग्ज़ाम. टेक इट सीरियसली, बिकॉज एक एग्ज़ाम देने का जो अंदाज़ होता है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट हाउ मच यू नो इट इज़ ऑल्सो अबाउट हाउ वेल यू कैन कीप योर सेल्फ काम एंड कंपोज. सो काम एंड कंपोज रहने के लिए जितना आपका एनवायरनमेंट नोन आएगा एंड लाइक द मोर कॉमन इट विल बी टू यू, द मोर calm you will be. So that is the goal here. Please try to simulate the environment of the exam as much as possible. So for that I've told you what you need to do, and follow each and everything that I've told you, because exam hall में ऐसा ही होने वाला है. And last thing that I would like to lay stress on, that review your papers. बस exam test दे दिया, mock test दे दिया और फिर छोड़ दिया, मज़े करने लगे, ऐसा नहीं करना है. because अगर आप ऐसा करोगे तो फिर mock exam देने का कोई मतलब ही नहीं है. So you have to review your mistakes and you have to read the relevant theory of those questions so that you can get that question or similar question correct the next time. तो आप जब पहले जब mock test देना शुरू करोगे, you will be getting many mistakes, but don't get discouraged by these mistakes. You have to review your mistakes, read the relevant theory, ताकि अगर same question आ गया या फिर उसके similar का कोई question आ जाता है in the coming papers or in fact in your NEET exam, then आप वो correct कर पाओ, because that is our goal. Our goal is NEET. Mock test is just practice. तो अगर आप ऐसे रिव्यू करोगे और थ्योरी पढ़ते रहोगे तो फिर आपका स्कोर्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा. एंड जस्ट एज एन इंडिकेटर टू चेक योर सेल्फ वेदर यू आर डूइंग वेल इन योर मॉक पेपर्स और नॉट, लास्ट 5 to 7 पेपर्स जो आप देने वाले हो उसमें अगर आप 600 के अप ला रहे हो, देन दैट इज़ अ गुड साइन, दैट इज़ अ गुड इंडिकेटर दैट यू विल बी एबल टू क्लियर नीट विद फ्लाइंग कलर्स. So that's it students, आज के लिए इतना ही. I hope that was a helpful video regarding what you will do with your 1 to 1.5 months after your board exam. Keep studying. Good luck.